Welcome all in ICT Cover channel. Myself Krupesh Naik. Welcome you all in this channel. Today we are going to discuss with our fifth chapter, that is concept of revenue and cost. Revision round is there going on with our. We are completing our fourth chapter. फोर्थ चैप्टर तक के हमने रिवीजन राउंड कंप्लीट किए हैं. आज हम फिफ्थ चैप्टर के रिवीजन राउंड के अंदर जाएंगे. फिफ्थ चैप्टर के रिवीजन राउंड को कंप्लीट करने के बाद 6, 7 और 8 को हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे. उसके बाद 6, 7, 8 के रिवीजन राउंड के अंदर हम जाएंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिक्स चैप्टर की. फिफ्थ चैप्टर के अंदर फिफ्थ चैप्टर के अंदर रिवीजन राउंड हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले थोड़ा एक कोट हम स्टार्ट करेंगे. जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी. संघर्ष अगर कठिन है तो जीत का आपको पूरा श्रेय मिल सकता है, मगर संघर्ष कैसा होना चाहिए? इजी नहीं, हार्ड होना चाहिए. एक क्वेश्चन नहीं आ रहे, दूसरे क्वेश्चन नहीं आ रहे, एग्जाम में ये फेलियर है, तो उनको धीरे धीरे शॉर्ट आउट करना है. हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. A1 लाने हैं 90 of 80, 70, इट इज प्रिडिक्शन बाय यू. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, मगर वो अचीव करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, और वो भी कैसा? कठिन. और जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी. तो सबसे पहले फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ के आए थे वो थोड़ा सा हम स्टार्ट कर ले, तो आपको पता आएगा कि कौन से चैप्टर के हमने क्या पढ़ा है. तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम थे, तब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था. हमारा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन के अंदर हमने डेफिनेशन पहले तो हमने स्टार्ट की थी. वेरियस टाइप ऑफ डेफिनेशन की बात की थी. इंट्रोडक्शन के अंदर हमने व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड सम एक्सपेंडिचर, कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, concept of managerial marginal cost help to understand the behavior of the firm. Then real income, opportunity cost are also helpful. Concept of wages type of fixed cost, variable cost are also helpful. This type of are very important factors for a very important point to decide the movement and to decide the direction of the firm. ये हमने कंप्लीट किया था. उसके बाद रियल कॉस्ट की डेफिनेशन की थी. रियल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which are not evaluated in the terms of money. The concept of real cost was given by the classical economists. They had presented this concept in the context of the main factor of the production, land, labor, but in modern times this concept is considered as a context of the capitalist and entrepreneur also. पहले हम देखें तो लेबरर और जो उनके साथी वो रियल कॉस्ट की डेफिनेशन थी, मगर अकॉर्डिंग टू मार्शल द लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन. फोर्स ऑफ फैक्टर जो है, जो प्रोडक्शन करते हैं, उन प्रोडक्शन करते वक्त उन लोगों को बहुत सारे हार्डशिप उठानी पड़ती है, बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है, बर्डन है उनके बाद बहुत सारा. तो इट इज नॉन एज ए रियल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, the capitalists have spare their saving to the entire industries or any firm, and they have risk whether they are getting profit or not. अगर हमें मुनाफा मिलेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो किया है वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी तरह से रिवर्स मिल सकते हैं. जो एंटरप्रेन्योर है वो लगातार सोचता रहेगा कि पूरे साल हम मेहनत करने के बाद कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज या कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं होगी ना, तो ये रिस्क है. और जो लेबर है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो वर्क करते हैं, उन लोगों को भी थकान महसूस होती है. इट इज नॉट कैलकुलेट इन पार्ट्स ऑफ मॉनिटरी कॉन्सेप्ट. सो दिस आर द प्रॉब्लम टू मेजर रियल कॉस्ट. उनको हम मॉनिटाइज नहीं कर सकते. उनकी एनएससीटी, उनकी सेक्रीफाइस, उनके पेन, वी आर नॉट गोइंग टू calculate in the monetary fund. So it is one type of psychological issue. It is a one type of psychological concept. Moreover, small imitate the factors created adverse effect health is people is surrounding area. The adverse effect on is cost is social views and there are cannot be measured. यानी बहुत सारे एरिया के अंदर, अगर अंकलेश्वर के आगे हम जाए तो बहुत सारा दृष्टि एरिया है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल की बैट्समैन पूरे एरिया के अंदर कवर होती है. ये सभी जो आजू बाजू वाले भुगतते हैं और वो सफर करते हैं, या वहाँ वर्क करने वाले वर्कर जो ये सभी पेन या ये जो डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, वो फेस कर रही है, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन द रियल टर्म्स. दैट इज इट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट. Opportunity cost. The cost of opportunity cost was presented by the Austrian economist. Very important. Real cost is a Western classical economics, and opportunity cost is presented by Austrian economist. But it was properly presented by the Marshall. The means of production have alternative use. For example,
if we use of one land in the base of wheat, we are not getting to use of rice or some of the sugar cane or whatever in our field. Why? Because if we use this field for the production of the wheat, we are not use it. So if we getting 3 lakhs from the wheat production, and if other farmer growing sugar cane and they get 5 lakhs in their farm, we have uh, we are not compare these two data in our field, because first we have already grown up 3 lakhs unit 3 lakhs rupees growth in our farm in the production of wheat, यानी wheat के अंदर अगर हमने 3 lakhs कमाए हैं, दूसरे फार्मर 5 lakhs शुगर कैन से कमा रहे हैं, तो हमारे फर्म को ये अपॉर्चुनिटी गंवानी पड़ी. इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट मीन्स if we have to lift out some of the opportunity for the worker also. If worker engage in other private sector and they are not engaged in the some public sector, and public sector employee get maximum and handsome money from the government, and the worker who are engaged in the private sector, they are not getting this type of handsome salary. So this is left out opportunity. It is called opportunity cost. It is not a measure of any form. It is not terms of measure by any form. For example, one can feed species of land via products in the same we are not going to. So we have to lift out this type of opportunity. That means if a factor of the production is used in the production of one commodity, so next best alternative is left out. The cost of the unbound or unproductive commodity, it is our cost is opportunity cost. This is the मेन थी डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी जो फील्ड के अंदर हम कुछ गंवा रहे हैं, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, और वो इनकम हमें अगर मिलती तो उनसे मुनाफा ज़्यादा होता, और वो हमने छोड़ दी, वो हमने लेफ्ट आउट कर दी, तो वो है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ प्रोडक्ट प्रॉब्लम इन द मेजरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Problem in the measuring of opportunity cost. There are 2 points very easy for you. One special ध्यान में रखना, one special से ध्यान में रखना है. One that is called factor with one use, and second factors having specific use. If any factor of the production has only one use, then the opportunity cost cannot be decided for them. For example, some piece of land is only used to produce grass. So far as that piece of land, opportunity cost cannot be calculated. अगर वहाँ grass ही प्रोडक्ट हो रहा है, wheat नहीं हो रहा है, राइस नहीं हो रही, शुगर कैन नहीं हो रहा, then it is not considered as a opportunity cost. उनके पास कोई चारा ही नहीं है, घास ही हम प्रोडक्ट कर सकते हैं. So it is a problem to calculate opportunity cost. Second factor है specific use. Specific यानी अगर आपके पास accountancy की नॉलेज है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो you are only बेस्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क. अगर कोई कोडिंग के ऊपर ध्यान देता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में ही पता चलेगा. दे आर नॉट लेफ्ट आउट द अपॉर्चुनिटी इन हार्डवेयर प्रोडक्शन. उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसे स्पेसिफिक नॉलेज वाले के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गंवाने की बात नहीं होगी. सो दिस आर द मेन फैक्टर्स, मेन प्रॉब्लम्स टू measuring opportunity cost. Monetary cost, very easy definition for you. The cost which are terms in monetary, that is monetary cost. But keep in mind that for the purpose of production, if some of the firm or production unit occurring this type of expenditure, that is called monetary cost. Concept of monetary cost is useful to economic analysis decision related to production. यानी अगर प्रोडक्शन यूनिट के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फर्म या प्रोडक्शन यूनिट जो खर्च करेगी, that is in terms of production monetary cost. So monetary cost is one of the important cost. Why? Because if it maximized, then profit will be reduced. Now second is short term and long term cost. In section C और D, section C या section D के अंदर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आते हैं आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन प्रूव करो. Give the write a short note on short term and long term economics costs. So according to the time period, in short time, monetary cost is presented. There are some factors of production whose quantity
can be changed easily with the change in the quantity of the factors of the production. Factors of the production. लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल की बात हो रही है. शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इजीली चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, एक्स्ट्रा लेबरर है, फ्यूल है, दैट विल बी इजीली वी कैन change in our unit of production, but some of are not going to change very easily, so it is not possible to change in short term. So short term is such a period in which a producer cannot change the size of firm but can increase productivity by the use of factors of production capacity. शॉर्ट टर्म एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर पूरे यूनिट के अंदर कोई भी चेंजेस प्रोड्यूसर नहीं कर सकते, मगर वो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर जो फोर्स ऑफ फैक्टर लाइक लेबरर है या फिर फ्यूल है वो अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं. यानी लैंड, बिल्डिंग, उसके साथ बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी वो इजीली बाय नहीं कर सकते. सो दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट, दे आर नॉट change in the short term, but some of the variable cost can easily change. Variable cost of some labor are getting more rent, some of the other entrepreneur can get some of the weight of this type. So in short term it may be possible, यानी जो फोर्स ऑफ फैक्टर शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म पीरियड कह सकते हैं. और जो लैंड बड़े बड़े प्लांट मशीनरी उनको हम शॉर्ट टर्म में इजीली मूव नहीं कर सकते, ऐसे कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्रोसीजर. लॉन्ग टर्म इज अ पीरियड इन विच प्रोड्यूसर कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फोर्स ऑफ फैक्टर लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कैपिटल हर एक को लॉन्ग टर्म में वो चेंज कर सकते हैं. एक मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाता है इन लॉन्ग टर्म ऑल कॉस्ट्स आर देयर, दैट इज वेरिएबल. जो फिक्स कॉस्ट पहले लैंड थी, प्लांट थी, मशीनरी थी, वो शॉर्ट रन में कैन नॉट इजीली चेंज, बट इन लॉन्ग पीरियड आफ्टर सम टाइम if the firm can want to expand their innovate their firm, then they all are variable. So in long term, if they want to expand their units, if they want to establish other branch in other areas, it is possible. They can easily buy. Why? Because at a long time they can get profit, they can earn something. So these are the fixed, these are the known as a long term. Now classifications of production cost. There are two classifications: short run production cost and long run production cost. In short run production cost there are four types: fixed, average fixed, variable, average variable. In long run everyone are going to change, every cost are remain variable. So in long run there is no fixed, there is no variable, there is no average fixed and no average variable. Now what is fixed cost, what is variable cost, what is average fixed, what is average variable, what is total cost, and what is total variable, average total cost, and what is marginal cost. That the point is to be considered with the help of Excel sheet. So here if you remember these all columns, you can easily give the definition of fixed cost, variable cost, total cost, average variable cost and total average cost and marginal cost. यहाँ पे जो टेबल है वो आपके सामने काफ़ी इजी है. सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की. डेफिनेशन काफ़ी इजी है. प्रोडक्शन 0 है, 10 है, 20, 30, 40, 50. If the in short run, very important, word is very important. In short run, whether there is an increase in the production or decrease in the production or remain 0, the cost which are remain constant, that is called 100. It is called fixed cost. यानी प्रोडक्शन कम हो, ज़्यादा हो या कुछ चेंज नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. और वेरिएबल, that is called change with the help of production. जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इंक्रीमेंट होंगे वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाएंगे. 0, 80, 150, 210, 290, 390. यानी if the production are increase, variable cost also increase. When 0, then there is 0. And when if in decrease in the production,
this cost is also decreased. That is called variable cost. Variable cost are going to here very easy. 0, 80, 150, 210, 290. Here also we can find out there are direct relationship or positive relationship between production and this variable cost. Why? Because if the production are increased, we can see here variable cost are also increased. So there are direct relationship, and keep in mind that 80, 0 plus 80, that is 80. 80 plus 70, that is 150. 150 plus 2, 150 plus 60, that is 210. 210 plus 80, that is 290. And 290 plus 100, that is 390. Very, very important when the variable cost are going with the example and schedule. We have to gap of 80, 70, 60, 80, 80 and 100. I repeat again. 80, 70, 60, 80 and 100. 80, 80 and 100. 0 से 80 का हम डिफरेंस ले तो 80 प्लस हो रहे हैं. 80 में 150 के अंदर हम डिफरेंस निकाले तो 70 इंक्रीज हो रहे हैं. 80 के अंदर 201 के अंदर 70 इंक्रीज हो रहे हैं और 210 के अंदर 80 इंक्रीज हो रहे हैं. 290 के अंदर 100 ऐड हो रहे हैं. तो कैसे आपको दिमाग में रखने हैं ये पॉइंट को 80, 70, 60. 80 यानी 0 प्लस 80. 0 तो होगा क्योंकि 0 प्रोडक्शन 0 कॉस्ट. यानी प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपनी इनकम, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो बढ़ते जाएंगे. और किसी एक लेवल के ऊपर वो 80, 70 के बाद फिर से मेंटेन होगा. 60 के बाद 80 हायर लेवल ऑफ इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, टोटल दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ दिस टू 100 प्लस 0, 100 प्लस 80, 100 प्लस 150. यानी ये अगर आपके सेट कर दिए तो आपके टोटल कॉस्ट भी बढ़ते जाएंगे. 180, 180, राइट. देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डिवीजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन. डिवीजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिवीजन प्रोडक्शन. यानी यहाँ पे जो हमारे पास 1050 है वो कैसे है? इट इज अ वन टाइप ऑफ डिवीजन बिटवीन these two that is here 100 divided by 10, 100 divided by 10, that is for 10. Here division between these two, that is 100 divided by 20. So as like as when the expenditure are increased, but it will be distribute among the total production, so it is diminishing more. We can find out 10, 5, 2.3, 2.5, 2.0. Now average variable cost. Average of variable, that is variable total cost divided by production. Here C3 divided by A3. C3 that is what? Total fixed cost, and A3 that is called 10, and C3 that is called 80. 80 by 10, 8. Getting? And 250 by 20, 7.5. So same like 310 divided by 30, 390 divided by 40, 490 divided by 50. So these are the example of average variable cost. Now total average cost. It is always in U shape. Total average cost is always in U shape. Total average cost always in U shape. यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो इट इज डिपेंड ऑन आवर टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल एवरेज कॉस्ट. टोटल एवरेज कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट डिपेंडेंट है, या टोटल कॉस्ट और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम कंपेयर करें ये दोनों की 10 प्लस 8, 10 plus 8 that is 18, 5 plus 7.5 that is 12.5. So there are two possibility for the average cost or total average cost, that is summation of total average fixed and average variable, or division of total cost divided by total production, that is 18 by 10. It is also 18, 118 by 10, that is 18,
215 by 20, 12.5, 310 by 30, 330, 10.9, वाइज वर्सा. सो ऐसे करके हम हमारा एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं. एंड एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज इन यूज से. नाउ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स व्हाट? Marginal, that is sum of extra adding. If our production is going to 10 to 20, so our total cost will be changed by 180 to 250. So differences between these two, that is called 70. 70 is known as a marginal cost. So marginal cost is evaluated by sum of evaluated by two column of subtraction of two column of total cost. 250 में से 180 गए 70, 310 में से 250 गए 60, एंड 490 में से 390 गए यानी 100. यानी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से हमारे टोटल कॉस्ट में जो चेंज आते हैं उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं. फर्स्ट जीरो के ऊपर कोई चांस नहीं, जीरो भी नहीं लिखना है, हमें ध्यान में रखना है. और अगर ऐसे प्रोडक्शन 0 पे से 10 आए, टोटल कॉस्ट 12.5 सॉरी टोटल कॉस्ट 250 पे से 180 पे से 250 आए, यानी 250 और 180 के डिफरेंसेस यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं 70 के. तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हुआ. मार्जिनल कॉस्ट इज लुक लाइक अ स्टिकी हॉकी स्टिक. हॉकी स्टिक के जैसा उनका शेप है. So with this table you can easily find out what is the fixed cost, what is the variable cost, what is the total cost, what is average fixed, what is average variable, and what is average total cost. And marginal cost is very important. It is very easy because if we see the differences between total cost, we can find out the marginal cost. Here 180 minus 100, that is called 80. Then after 250 minus 180, that is 70. So this is very easy for you. If we increase the production in unit, then how many total expenditure are added with the excess unit of production? The difference between these two, that is called our marginal cost. With the help of this all, we can find out so many chart are there. Here this is fixed cost chart. Why? Because on X there is a production, on Y there is a charges of cost of production. So fixed cost is remain parallel to X axis. There is no changes in the short run period. Whether production are increase or decrease or zero, it remains same. So that is first chart. Second, that is variable cost charge. We can see here at the level of 1 unit of production, there is a increment in the variable cost. When the production is going on and on, the variable costs are going up. So it is going left side to right side in positive way. This is the variable cost diagram. And we can see here 0, 60, 0 plus keep in mind that 80, 70, 60, then 80 and 100. अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कर 0 है. उसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है? 18, 17, 60. 18 यानी 0 में 80 ऐड करेंगे 80 में 70 ऐड करेंगे 150 में 60 ऐड करेंगे 210 के बाद हमें फिर से वापस अपने 80 के सीरीज के ऊपर आ जाना है. यानी 80 ऐड करेंगे 290 और 290 के अंदर 100 ऐड करेंगे एटलीस्ट 390. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन अप हो रहा है वैसे वैसे ये सबसे पहले इंटरसेक्शन हुआ 80 के ऊपर. उसके बाद उसके 80 में हमने 70 डाला 150, यहाँ पे 150 के बाद 60 ऐड किया यानी 210 और 210 के अंदर हमने 80 डाला यानी 290 और ये डिफरेंस ये सब देख रहे हो वो ज्यादा है क्योंकि आफ्टर सम ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन द वेरिएबल कॉस्ट आर गोइंग अप. ये आपने देखा. देन आफ्टर थर्ड चार्ट इज फॉर दिस very important, that is total cost. Total cost is 100, 200, 300, 400 on y axis and x there is production. It is due to one factor is variable cost. Variable cost are increases, so variable cost and total cost are going to parallel in each time. Why? Because fixed remain fixed, there is no change in the fixed cost, but due to variable cost there are increment in the total cost, so that the parallel and direct relationship between production and variable cost, due to these factor our total costs are remain going up. Then after fourth chart for this is the three together. यहाँ पे आप तीन चार्ट देख सकते हो.
ये जो है फिक्स कॉस्ट का है, इट रिमेन सेम। देन आफ्टर ये जो कलर है उसके अंदर आप देख सकते हो बीच वाला जो पिलर है वो 1 2 3 ये जो पिलर जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन जीरो है तो कुछ नहीं हो रहा है, मगर प्रोडक्शन जैसे बढ़ा वो अपने आप ऊपर जा रहा है। एंड थर्ड वन इज टोटल कॉस्ट। हियर वी कैन फाइंड आउट इफ द production are zero, there is no any pillar in this column. Then after when the production is going on, it will be increased, so that the total cost are not, because total cost and the fixed cost are similar at the level of zero. Why? Because there is no production cost, sorry, there is no production any unit, so our variable cost remains same, but fixed is fixed at all levels. So as first 0 unit of production, there are 0 and 100, 0 and 100 due to why? Because of fixed cost, total cost is 100. Then after these two adding, we can find out 180, these two 250, 310, 390 and 490. These are the main. Then after, this is the diagram. This is a diagram of average variable cost, average variable cost, sorry, average fixed cost. This is the diagram of average fixed cost. We can see here from left to right it is negatively sloped. Why? Because it is divided in the rest of the production. All the production can easily divided in the fixed cost. So at this first level of this we can find out there is a higher rate of our average fixed cost, and no there is change. Why? Because of at the level of second unit here, when the production are increased, all the fixed costs are divided into production, so that it will be go up to left to right and downwards. So here this slope are going to downward. Then second chart we can going to say that is average variable cost. Average variable cost, it is look like a one type of U shape, is like as average cost. Why? Because when the initial level of the stages there is no any uh, higher rate of the average variable cost, but then after at the level of 4 we can see it is depend on our average variable cost is depend on variable divided by production, and variable is decided with some of the data after increasing in the production it will be increased. हम वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे जब प्रोडक्शन हो रहा था तब प्रोडक्शन से धीरे धीरे वो डिमिनाइज हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेवल है 7.5 का हुआ, धीरे धीरे वो जाके यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लॉट के ऊपर 7 की वैल्यू हुई, धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े तो 7.25, देन आफ्टर यहाँ पे हम देखें तो आगे बढ़ रहा है ये कॉस्ट पूरा 7.8, यहाँ से देखें तो ये 7.8, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो यहाँ पे जीरो था, कोई भी खर्च नहीं हो रहा था, क्योंकि इट इज जीरो डिवाइडेड बाय एनी यूनिट इट विल कम जीरो, सो स्टार्टिंग विद जीरो एंड देन आफ्टर व्हेन द प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जब प्रोडक्शन आगे बढ़ रहा था तो हमने 80 70 60 को ऐड किया, 80 60 70 को ऐड किया, तो डिवीजन भी इनिशियली 80 76 के हिसाब से ये डिविजनिंग हो रहा है। देन आफ्टर रिमेनिंग प्रोडक्शन यूनिट इट विल बी इंक्रीज, फिर हमने 80 ऐड किया था, उसके बाद 100 ऐड किया था, तो ये जो कर्व है लुक लाइक अ वन टाइप ऑफ U-shaped कर्व। आल्सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लुक लाइक अ एवरेज टोटल कॉस्ट। देन आफ्टर 7 chart is going to vary, you can see this is the total average cost. Total average cost always in U-shape, or average cost is a similar name of total average cost, that is totally U-shape. We can see this diagram as a U-shape. Why? Because total cost, average total cost or total average total cost or average cost is depend on two factors, that is fixed cost and average fixed cost and variable cost. Variable cost are increasing after some of the limit, that is +80 किया, उसके बाद हमने +70 किया, उसके बाद +60 किया, जैसे जैसे हमारे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते गए और एक लेवल आया जिसके ऊपर मिनिमाइज हुआ ये वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज हुआ, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट भी एक लेवल पे हुआ, और उसके बाद जो भी एवरेज बढ़ी उनका एक रीजन था कि लॉन्ग रन के अंदर हर एक वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट आर रिमेन वेरिएबल, तो धीरे धीरे ये खर्च बढ़ा, यानी 80 हुए उसके अंदर, देन आफ्टर 100 हुआ, तो ये जो रीजन था उसकी वजह से हमारे एवरेज कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट हुई, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया है। देन आफ्टर दिस इज द okay, it is similar than this all.
Okay, it is a marginal cost. It is a one type of hockey stick. You can find out this diagram look like a hockey stick. Marginal cost means what? Additional unit of production can may change the total cost. अगर 10 एक कम हम बना रहे हैं और 1000 खर्च टोटल हो रहा है, और अगर दूसरे 11 के आगे हम बढ़े, 11 यूनिट बनाए, 100 यूनिट से 101 यूनिट बनाए, या 500 से 501 बनाए, यानी एडिशनल यूनिट ऑफ 1 if we produce in the production unit, then it will be change our total cost. If 10,000 are there and 10,100 are going with the excess 1 unit of production, the total differences between total cost, total expenditure, total cost, that is called 10,100 minus 10,000, that is additional 100 due to which factor? Because of additional of 1 unit production. If the 1 unit production are increased, so that our total production are going to 10,000 to 10,100. So that 10,000 to 10,100 and difference between 10,100 and 10,000, that is called 100, is known as a marginal cost. So it will be going up due to why? Because total cost is affected this. So it is look like a hockey stick. So these are complete here. Now very important point is revenue. Revenue are very important. Revenue are basically based on the total price of unit and sold unit. इनकम हमें सेलिंग से मिलती है. तो सेलिंग, अगर आपके हाथ में 10 पेन है और 2 रुपीज के हिसाब से आप बेच रहे हैं, तो 10 इंटू 2 करें तो 10 into 2, that is 20. 20 is your income. Same way, there are so many differences are there. Here two market are there, in perfect competition or in imperfect competition. Two type of market are there. In perfect competition, price I remain same. Every producer, consumer and seller know the scenario of the market. There is awareness of all these things. Second, there are no any issue about the marketing or increasing the selling, because all are know the commodities and the skill of commodity, quality of commodity. So there is no need of any advertising cost. So there is no any requirement of effort to increase the selling. So price remains same. Very important one is that here price are remain same. Very important factor is price is remain same. You can see in imperfect competition there is price are decreasing. Why? Because they want to increase their selling. अगर उनको अपने selling को बढ़ाना है, तो selling बढ़ाते वक्त हम सोच सकते हैं कि प्राइस को अगर कम करेंगे तो सेलिंग बढ़ सकती है. मगर इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी कैन फाइंड आउट द डेटा दैट देयर इज नो चांस ऑफ एनी decrement in the price, because every consumer and every producer are know, every seller are know the scenario, the scale, the quality, this all are aware of by all. So here we can find out the price are remain same, but in this imperfect competition there are a decreasing in the mode of the price. With the help of this table, here sold unit are 1 2 3 4 5 6 and price is 20 level. Then there are 3 tabular requirement, that is total revenue, average revenue and marginal revenue. Here in total revenue we can find out total revenue means what? If there is a 2 rupees each for any pen and you sold 20 units of pen, that 20 into 2, that is 40. 40, that is called total revenue. So total revenue is multiplication of sold unit and price. So 20 into 1, 20, 20 into 2, 40, 20 into 3, 60, 20 into 4, 80, 20 into 5, 100 and 20 into 6, 120. So this table is the multiplication between these two table, these two columns, and second one is average revenue. Average revenue, it is a division between total income and sold unit. Total income को हम अगर sold unit से division करेंगे, the data we found, that is called average revenue. Average always division, but here average division of our total income gained by multiplication of sold unit and income. So 20 is divided by 1, that is called 20. 40 is 20. 40 is divided by 2, that is 20. 60 is divided by 3, that is 20. 80 is divided by 4, that is 20. 100 is divided by 5, that is 20. And 120 is divided by 6, that is 20. So here average revenue is all time same as our price. And second, marginal revenue, very important. You have been asked in section C or section D or section A, what is the marginal revenue? Give the definition and give the formula. So keep in mind that if addition of 1 unit of any sale unit, if our total revenue are fluctuate, that is the difference given us marginal revenue. So marginal revenue is a terms of differences between total revenue. Why total revenue? Because if addition of 1 unit of sold unit, then there is changes in the total revenue, that is called
मार्जिनल रेवेन्यू, यानी अगर हमारे एक यूनिट ऐड हो रहे हैं सेलिंग के, उससे अगर हम टोटल रेवेन्यू के डेटा को देखें 20 पैसे 40 पैसे 60 पैसे 80 पैसे 100 पैसे 120, यानी जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, उसका एक रीजन है कि आपने एक अतिरिक्त यूनिट को ऐड किया। अगर एक अतिरिक्त यूनिट आपका ऐड हो रहा है और उन ऐड होने से कितने चेंजेस आ रहे हैं टोटल रेवेन्यू के अंदर, दैट इज द डेटा ऑफ मार्जिन रेवेन्यू। सो मार्जिन रेवेन्यू कैन फाइंड आउट 20 20 20 20 20 20 20 at 6 unit of selling. So here one statement is going on: price, average revenue and marginal revenue are remain same in perfect competition. In perfect competition, I repeat again, price, average revenue and marginal revenue are equal. You can find out in this table. Here price is remain 20. Second, fourth column is average revenue. It is also same 20, and margin revenue also you can find out it 20. So all is equal. So P equal to AR equal to MR. Now with the help of this same condition here in imperfect competition, but keep in mind that very important factor is that in imperfect competition, two words are there, IM and here PR. IM, that is imperfect competition, and here IM is removed. So perfect competition price remains same. The imperfect competition price have to reduce. Why? Because they want to increase their selling and attract the customer, and if they attract the customer, then and then only they can get maximum profit and revenue. So here same multiplication of the total revenue, that is 20 into 1, 19 into 2, then 18 into 3. Price are reducing 20, 19, 18, 17, 16, 15. So it is reducing price, decreasing price, and multiplication of these two columns, that is called total revenue. Average revenue, that is same. If we division of total revenue to sold unit, that is called 20 by 1 or 30 by 2 or 50 by 3 or 68 by 4 or 80 by 5, 90 by 6. That is the average of our revenue. So average revenue is division between the total revenue and sold unit. And margin revenue, same here. If we add our 1 unit of the selling, our total revenue are 20 to 38. So the differences between these two, it is called 18. 38 minus 20, 18. 44 minus 38, that is 16. 68 minus 54, that is 14. 18 minus 68, that is 12. And 19 minus 80, that is 10. Why this fluctuated? Due to addition of our one selling unit. If we add our one selling unit, there is a change in the total revenue, that is called marginal revenue. So here there are some data are there, and there are some chart are also there. You can find out with this, so easily you can understand. So this portion of the total revenue, marginal revenue and average revenue ended here. After that, we can see this all in this your textbook. There is no any change. Everything are covered with this only one table. Your entire chapter are going with that table. So if you know that table and scenario of that, you can easily get 100 percentage mark on this chapter. Here one only remaining part of this, the formula of the marginal cost. Marginal cost, that is MCN. MCN equal to TCN minus TCN minus N. Very important. In section B, state or give the definition of marginal revenue and give the formula of marginal revenue. So you will get 1 marks, but you have to clarify what is MCN, what is TCN, what is TCN minus 1. So N, that is called number of unit, MCN, that is called marginal units of cost of output, then TCN, that is total cost of units of N, TCN minus total cost of N minus 1 units, and you will get this type of data. Here nothing but 16 minus 9, that is called 7, 21 minus 6, 16, that is called 5. So difference between total cost due to output of addition of our production, it is called marginal revenue. I repeat again, MCN equal to what? MCN equal to TCN minus TCN minus 1. TCN minus TCN minus 1. Keep in mind, keep note down in your notebook. Very important. These are also clear. Then after revenue concept are there. The interrelationship that we can discuss deeply when our section E are going on. Then after this, it is total revenue divided by total sale. Then after yes, margin revenue is what? Margin revenue means Rn minus Rn minus 1. Margin revenue, that is Rn minus Rn minus 1 in 1 marks. Now with the help of this table of the revenue,
You can find out this is AR equal to MR equal to B. In perfect completion, AR, MR and P are equal. AR, MR and P are equal in perfect completion. So these chapters are completed. But now very important, don't miss. This is very important. The next session is that is how to represent your answer in your notebook. How to represent in your notebook. How to section D, E and E are going on. So very important factors for you, that is your question answer. Question answer, if you know how to write in the notebook, then you will get. How to write in the exam, then you will get marks. So very important session will start now. Keep in mind, one notebook is there in your hand. Whenever I speak, please note down. You have to note down or enter in your textbook whatever the data is going on. So very important is going now. So now here first question for you as MCQ, cost of production and concept of revenue. First question is there. First is MCQ for 1 marks each. How is average cost curve shaped? Average cost curve का shape कैसा है? It is always in U shape. U shape के अंदर होता है वो. And which cost cannot be measured? Which cost cannot be measured? The real cost. Real cost is a one type of one of the tire, one of the sacrifice. This type of is not evaluated as a monetary sense, so that it is real cost is not can be measured. How is slope of fixed cost? That is parallel to x-axis. Fixed never going to plus or minus, whether there is a production or not, or plus or minus, it is steady. In which market are average revenue and margin revenue same? In which market? Very important. In which market? Two types of market, perfect and imperfect. So here perfect competition market is the market at where the average revenue and margin revenue remains same. Which cost has direct relation between the production unit? Which cost has direct relation between the production unit? That is variable cost. If the cost is if the production is increased, cost increase. Production is zero, cost zero. So these are the relation that is direct, plus minus zero zero. That is called variable cost. When production is zero, then what cost is positive? When production is zero, then what cost is positive? That is fixed cost. Whether zero production plus minus, the cost remains same. That is called fixed cost. That is when the production is zero, then the cost is positive. That is fixed cost. What type of cost is real cost? What type of cost is real cost? That is non-monetary. We are not giving any monetary for that. Which type of cost curve is parallel to x-axis? Repeatedly here, that is fixed cost. In the long run, all costs are variable, whether fixed or variable, all are variable. In which run? That is long run. In dash run, all costs are variable, that is long run. When the firm size becomes large, what is the change in the average cost? That is increases. When the firm size becomes large, what is the change in the average cost? That is increase. Now for section B, for one line question, 1 marks each. Why does the average fixed cost decrease with increase in the production? Why does the average fixed cost decrease with increase in the production? यानी production अगर बढ़ेगा तो average cost क्यों decrease होगी? Why? Because the increase in the production, total fixed cost distributed among the more and more units. जैसे जैसे production बढ़ेंगे 100, अगर fixed cost है 0 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, यानी जो production 1 2 3 4 आगे बढ़ रहे हैं तो it will be divided by total production. 100 by 0, 100 by 100, 100 by 2, 50, 100 by 3, 33 points. So that is decreasing in fixed cost. Why? Due to production and all the fixed costs are distributed among more and more units. Real cost means what? The cost increased during the production process due to tension, stress, insecurity by the laborer and by capitalist, which is not valued in the monetary terms, is called real cost. Very important. The cost increased
during the production process due to tension, stress, insecurity. These all are the elements cannot be measured in terms of money. So it is non-monetary cost. It is called real cost. Due to formula of marginal cost. MCN equal to TCN minus TCN minus N. Very, very important. And you have to explain all in detail. TCN, that is number of units of production, that is TCN total cost of number of units. TCN minus 1, that is N minus 1 total cost, and MCN, that is marginal cost of numbers. So TCN minus TCN minus 1. I repeat again, TCN minus TCN minus 1. What do you mean by fixed cost? The cost which remain constant when production increase, decrease or zero in short run. Very important word, in short run. If you have missed this word in short run, you will not get 1 marks in short run, because every time when the long run period, every fixed cost become a variable cost. So the cost which remain constant when the production increase, decrease or zero in short run is called fixed cost. Fixed cost curve is parallel to x-axis, that you know. Which concept of revenue can be known as a price? Which concepts of revenue can be known as a price? Which concept? That is average revenue. Average revenue, that is total of income divided by total of sold unit. So it will be give our price. अगर 10 पेन 2 रुपीस के हिसाब से हम सोल्ड कर रहे तो 10 into 2 20. So 20 divided by 10 equal to what? 2. 2 it is price. So average revenue is none of total revenue divided by total sale unit. So the division between these two, it will come to price. What is monetary cost? The cost incurred in the form of money for the production process is called monetary cost. Very important. The cost incurred in the form of money for the production process. For the production process is called monetary cost. Now, what does the firm get when marginal cost is less than marginal revenue? What does the firm get when the marginal cost is less than marginal revenue? यानी marginal cost अगर marginal revenue से कम होती है तो firm को क्या मिलने वाला है? That is profit. Profit. अगर खर्च ज्यादा नहीं है, income हमारी ज्यादा है तो हमें profit ही होने वाला है. What do you mean by marginal revenue? Very, very, very important question is there. What do you mean by marginal revenue? Marginal revenue means the increase in the total revenue of the firm due to sale of one additional unit of the commodity. Marginal revenue means the increase in the total revenue. Very, very important. You have to start increase in the revenue point. Total revenue अगर बढ़ेगी मगर due to which factor? Due to sale of the one additional unit of the commodity. Marginal revenue means the increase in the total revenue. Marginal revenue means the increase in the total revenue of the firm due to sale of one additional unit of commodity, that is called marginal revenue. What do you mean by short run? A short run is such a period in which certain factors of production remain fixed. A short run is a such period in which certain factors of the production remain fixed. यानी बहुत सारे factors ऐसे हैं जिनको हम short run में change नहीं कर सकते, जैसे plant, machinery, land, building, factory. These all are the fixed cost. It never be changed in short run, and a short run is a such period which certain factors of production remain fixed. That is called short run. What is opportunity cost? Very important. What is opportunity cost? Opportunity cost means the cost in which the best alternative use of factors of production is left out. जो factors of production है, जो factors of production land, labor, intermittent capital है, वो अगर left out हो, miss कर दे कोई opportunity को, तो वो cost opportunity cost है. That is, opportunity cost means the cost in which the best alternative use of factors of production is left out. By which other name is real cost known? Very, very, very important. By which other name is the real cost known? Non-monetary cost. Very, very important. Real cost never be comes in money tiredness and some of the insecurity feeling. These all are the non-monetary cost. It will not calculate in the monetary form. State the classification of short-run production cost. First, fixed cost. Second, variable cost. Main two are there, fixed and variable. But in fixed there is average fixed also, and in variable there is average variable also. But in long run there is no any types of cost. State the classification of revenue. Revenue की definition हमें
क्लासिफिकेशन पूछा गया है तो टोटल रेवेन्यू, टोटल दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल, TAM, टैम, टैम करना है हमें, टैम, TAM, टैम, टैम याद रखना है, TAM, टैम, टैम यानी टोटल एवरेज एंड मार्जिनल। बाय विच नेम इज वेरिएबल कॉस्ट नन, दूसरे कौन से नाम है वेरिएबल कॉस्ट के, दैट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी वो स्टेबल नहीं होगा, 0 0, प्रोडक्शन 1 100, प्रोडक्शन 2 200, प्रोडक्शन 4 400, that is called unstable or direct relation with the production or main relation with the production. That way there are three names of the variable cost, that is unstable, direct or main cost. State the classification of production. First, short run production cost, second, long run production cost. How is average fixed cost curve? Negative slope. How is the average फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसा है, वो नेगेटिव स्लोप करता है क्योंकि वो लेफ्ट से राइट तक आगे जा रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जो भी फिक्स कॉस्ट है वो अपने टोटल प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। अगर 100 के ऊपर अगर हम एक यूनिट बना रहे तो 100 by 1 100, 100 by 2 50, 100 by 3 33.3, 100 by 4 25, that is in negative, 100 50 33 25, so its slope is go down to negative slope, negative mode, so it is cost curve is negative slope. On what is the change in the total cost base, on what is the change in the total cost base, the change in the total cost based on change in amount of variable cost, amount of variable cost, on what the change, on what is the change in total cost, total cost का रीजन कौन सा है जो चेंज हो रही है, तो फिक्स इज रिमेन फिक्स, 100 100 100 मेंटेन, देयर इज नो एनी चेंजेस व्हाटएवर द प्रोडक्शन प्लस और माइनस और जीरो, बट ड्यू टू विच फैक्टर, due to variable factor, variable cost are plus and minus, then total cost is plus and minus, so on what is the change in the total cost base, that change in the total cost base is on the changes in amount of variable cost. For the section C question answer, maybe sometimes C are converted into D also, so C and D are parallel here, but C are basically in 2 marks, D are basically in 3 marks. So what do you mean by short run? What do you mean by short run? What do you mean by short run? Very very important. There are 3 points. This is the point. If you are not explained in detail, you are not getting full marks. You will get 0. This is the point how to go in this section COD answer. So if you have 3 points or 2 points, sorry, in 3 points in these questions, then you will get 2 marks. So first of all, what is mean by short run? Short run की definition आपको देनी पड़ेगी. What is the means of short run? Short run की definition के बाद example, उनके example आपको लिखने पड़ेंगे, और example of the variable factor like labor, electricity. तो सबसे पहले What do you mean by short run? उनकी डेफिनेशन अगर हमने देनी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि short run is a such period in which a producer cannot change the size of the firm. A short run is such a period in which a producer cannot change the size of firm but can increase production by using the factors of production. I repeat again, a short run is such a period in which a producer cannot change the size of firm but can increase production by using the factors of production. सेकंड, शॉर्ट रन के अंदर आपको मैंने बोला है एग्जांपल के हिसाब से जाना है, तो शॉर्ट रन इज सच अ टाइम in which certain factors of production like plant, heavy machinery, building of the factory, etc. are fixed. It never be changed. That is the example. It will not change in short run. And third point is, in short run, with increase or decrease of variable factors like raw materials, labor, electricity, etc., production can be increased or decreased. यानी ये जो 3 पॉइंट है आप सेक्शन सी और या सेक्शन डी के अंदर भी ऐसे एक्सप्लेन करोगे, then you will get 3 marks. What is the meaning of average fixed cost? Give the example. 3 पॉइंट ध्यान में रखने. Definition of average cost, formula of average fixed cost, and elaboration with example. तो ध्यान में रखना है what is meaning of average fixed cost. What is meaning of average fixed cost and their example. तो average fixed cost जो है तो example आपको थोड़े से explain भी करने पड़ेंगे.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट. Average cost is a cost that is called cost per unit. Average fixed cost is obtained by dividing total fixed cost of a firm by total production. Average fixed cost is obtained by dividing total fixed cost. Here TFC, that is called total fixed cost. Its formula is there. Total fixed cost, average fixed cost is obtained by dividing total fixed cost of a firm by total production. Its formula of a TFC divided by TP. TFC, that is called total fixed cost, and TP, that is total production. For example, if the total fixed cost of a firm is 2000 units and 8000 is their टोटल फिक्स कॉस्ट, 8000 का फिक्स कॉस्ट है, टोटल हमारी 2000, तो 8000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 8000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 40 इज आवर फिक्स कॉस्ट. आपको एक एग्जांपल के साथ उनको इलैबोरेट करना पड़ेगा 2 या 3 मार्क के अंदर. गिव द डिफरेंसेस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच के डिफरेंसेस अगर पूछे जाए 2 मार्क्स में आपको ध्यान में रखना उनकी डेफिनेशन, उनके फॉर्मूलेटिंग, प्रेजेंटेशन. तो डेफिनेशन क्या है? Total cost means the sum of the total fixed and total variable. Total fixed cost या total और total variable को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे दोनों का, fixed cost plus total variable cost, then you can find out total cost. Second, total cost equal to total fixed cost and total variable cost, that is total revenue, that is सेलिंग यूनिट इनटू प्राइस. यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन दोनों की लिखनी है. डेफिनेशन के अंदर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि टी आर इक्वल टू व्हाट, दैट इज टोटल रेवेन्यू, दैट इज एस इंटू पी. एस दैट इज कॉल्ड सेलिंग यूनिट्स, सोल्ड यूनिट, एंड पी दैट इज कॉल्ड प्राइस पर यूनिट. तो प्राइस पर यूनिट यानी आपकी प्राइस 2 रुपए से पेन की और 10 पेन बेच रहे तो 10 इज एस एंड 2 इज इक्वल टू प्राइस. 10 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड 20 एंड 20 इट इज कॉल्ड टी आर. आपको इस फॉर्मूला के अंदर आपको टोटल रेवेन्यू भी ध्यान में लेनी पड़ेगी. सो total cost equal to total fixed cost plus total variable cost. There is a cause effect relationship between total production and total cost. If total production is more than total cost is more, so total cost की आपको ऐसे definition के साथ थोड़ा प्लस माइनस करके आपको एक एग्जांपल भी देने पड़ेंगे. टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सेल. सेल इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. सेल से हमको जो भी इनकम मिलती है वो टोटल रेवेन्यू बनती है. फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट, दैट इज एस एंड पी. एस और क्यू दैट इज क्वांटिटी ऑफ सेलिंग एंड पी फॉर प्राइस. So TR equal to Q into P. If the total units sold increases or decreases or price per unit increases or decreases, what changes in total revenue? Keep in mind that अगर आपके सेलिंग के यूनिट बढ़ते हैं या आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपके टोटल रेवेन्यू 100% इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं. तो ये थर्ड क्वेश्चन, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. तो डेफिनेशन दोनों की लिखनी है, उनके फॉर्मूला लिखने हैं और उनको थोड़ा समझाना है. 3 पॉइंट के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे लिखा है रिलेशन विद टीआर विद सेल ऑफ यूनिट. अगर सेलिंग यूनिट 10 पेन से 20 पेन बेच रहे हो, 20 से 30 पेन बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल यूनिट इज प्लस, और प्राइस पहले 2 रुपीस रखी फिर 3 4 तो भी आपके टीआर प्लस होने के चांसेस है. सो हियर सेल यूनिट इज प्लस 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 और प्राइस प्लस 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 रिजल्टेड इनटू टीआर. टोटल रेवेन्यू इज आल्सो प्लस, दैट इज इंक्रीज. नाउ फॉर सेक्शन डी एंड ई, गिव द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम. सेक्शन ई या डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. गिव द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम. यानी वेरिएबल कॉस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, उनके डायग्राम ड्रॉ करने हैं और उनको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इन्फॉर्म करना है. सबसे पहले नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको 2-3 बार गौर से देखना. अगर आपको डेफिनेशन आती है तो शेड्यूल और ग्राफ आ ही जाने वाले हैं और एक्सप्लेन करना बाएं हाथ का खेल है. क्या? अगर आपको डेफिनेशन आती है किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की. अगर आपको डेफिनेशन आती है तो शेड्यूल और ग्राफ आ ही जाने वाले हैं, क्योंकि शेड्यूल से बनता है ग्राफ. ध्यान में रखना, डेफिनेशन आती है शेड्यूल अपने आप आने लगेगा. यानी अगर आपको डेफिनेशन आती है तो शेड्यूल और ग्राफ आ ही जाने वाला है और एक्सप्लेन करना आपके बाएं हाथ का खेल है. ये आपको 2-3 बार पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर 4 पॉइंट छिपे हैं.
सेक्शन ई और सेक्शन डी के लिए। अगर ये आपके दिमाग में सेटअप हो गया तो कैसे क्वेश्चन लिखना है, यू कैन इजीली राइट एंड गेटिंग 3 or 5 मार्क्स इन योर एग्जाम। सो गिव द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। सो पॉइंट कौन से है, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो शेड्यूल और ग्राफ आ ही जाने वाला है, और एक्सप्लेन करना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इज देयर, पॉइंट के ऊपर से हम जा रहे तो ये डेफिनेशन दैट इज हियर डेफिनेशन, शेड्यूल दैट इज सेकंड शेड्यूल, डायग्राम और ग्राफ दैट इज डायग्राम और ग्राफ हियर, एंड एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेशन है the cost which increased with the increase in the production, decreased with the decrease in the production, and zero when the production is zero is called variable cost। ये आपकी डेफिनेशन हुई वेरिएबल कॉस्ट की। देन इन वेरिएबल कॉस्ट प्राइस ऑफ, एग्जांपल देने हैं आपको, थोड़े डेफिनेशन को प्रूव करते वक्त आपको एग्जांपल भी देने पड़ेंगे। इन द वेरिएबल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, टैक्स ऑन प्रोडक्ट, सेल टैक्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो प्राइस प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वो अपने आप टैक्स भी बढ़ते जाएंगे, इनकम भी बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ सेल टैक्स भी बढ़ते जाएंगे, वेजेस भी लेबर को देने पड़ेंगे। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम ये सभी खर्च नहीं करेंगे, बाकी हर एक ऊपर खर्च करते रहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट is also known as a main cost because it is direct relationship between these two। आपको समझाना है ये अच्छी तरह से कि डेफिनेशन के अंदर उनके एग्जांपल शेयर करने के बाद उनको समझाना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखती है। प्रोडक्शन जीरो कॉस्ट जीरो, प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट प्लस, प्रोडक्शन माइनस कॉस्ट माइनस। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आल्सो। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज ए अनस्टेबल, और उनके वेरियस नेम से डेफिनेशन के अंदर इतनी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें। डेफिनेशन के साथ उसके एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ उनके वेरियस नेम और रिलेशनशिप। नेम उनके वेरियस लिखने पड़ेंगे हमें। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज ए अनस्टेबल डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट इज वेराइज इन प्रोडक्शन चेंजेस। ये जो कॉस्ट है उनका दूसरा नाम है अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहेगा। फिक्स कॉस्ट तो स्टेबल है, कोई भी प्रोडक्शन करो it will remain same, but here in variable cost plus plus minus minus and 0 to 0, so there's a direct relationship, that why it's called direct cost or unstable cost. Let with schedule that is called 0 1 2 3 4 production or increase, or production first column 10 20 30 40 50, and as per production is 0 variable cost remains 0. If production is increased 10 20 30 40, then the variable cost also 80, then 150, then 210, then 290, then 390. These are the main examples. Very clear that this is the very important and schedule of the variable cost. If you know that very well, then you will get all the cost is. Why? Because on fixed cost is remain same, variable are increased with some of the condition increase, that is in first level it will 0, then after plus 70, that is 70, plus 80, that is 80, plus 70, that is 150, plus 60, that is 210, then after plus 80, that is 290, and plus 100, that is 390, as various type of production. So these are the schedule. With the help of this schedule, on x-axis there is a production, on y-axis there is a variable cost. With the help of intersection of production and the variable cost, we can see there are some positive diagram, that is left to right, it will go upward. It will very easily increasing with the production, and it is 0 if the production are 0. The slope of the variable cost is positive up to some of the specific point, it will be go up, and then after it very quickly go up. 3 पॉइंट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 0 1 2 3, 0 के ऊपर 0 प्रोडक्शन, 1 के ऊपर 80, सेकंड के ऊपर 80 में हम 70 ऐड करेंगे 150, और दूसरे में 150 के अंदर अगर हम 60 ऐड करें 210, तो थर्ड पॉइंट तक बराबर जा रहा है। उसके बाद फिर से 80 का अप होता है, तो किसी एक पॉइंट के बाद वो वेरिएबल कॉस्ट काफी इंक्रीज होता है। तो ये आपको कॉस्ट का पूरा ABC पॉइंट के साथ उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ये बात हुई सेक्शन डी या ई के अंदर से। लिमिटेशंस इज इन मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट अ शॉर्ट नोट। लिमिटेशंस क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन left out some of the opportunity
from the production unit or some of the other, that is called limitations, opportunity cost. तो यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट आ गए, खास पॉइंट आपके लिए। क्या पॉइंट है? एक खास बात, खास यानी स्पेशल, एक यानी वन, एक खास बात यानी वन स्पेशल, वन स्पेशल, एक खास बात है। ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से दिमाग में रखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक खास बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या है? एक खास बात है। एक खास बात का मतलब खास यानी स्पेशल और एक यानी वन। तो ये दो पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक तो फैक्टर ऑफ यूज, फैक्टर्स विथ वन यूज, वन यहाँ पे आ गए, और फैक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक यूज, स्पेसिफिक आ गए, यानी स्पेशल से स्पेसिफिक लेना है हमें। एक खास बात यानी वन स्पेशल, वन दैट इज वन यूज एंड स्पेशल दैट इज स्पेसिफिक यूज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेट यूजेस, for example more than one uses. Thus opportunity cost is the cost incurred in the leaving the best alternative, leaving the best alternative use of the factor production. Then labor intervention capital जो है वो अगर कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, the limit that is called the opportunity cost. The limitations are there. First limitation is one that is called one use, that is called factor with one use. जितने पॉइंट लिखोगे मार्क नहीं मिलने वाले, उसके अंदर जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। देन यू विल गेट 3 out of 3 और 5 out of 5. So 3 out of 3. Then factor with one use, that is if any factors of the production, land, labor, intervention capital, whatever, if any factors of the production has only one use, then its opportunity cost cannot be decided. For example, some pieces of land is only used for the produce of wheat, its opportunity cost cannot be calculated. अगर एक मैदान है, मैदान के अंदर, फार्म के अंदर अगर शुगर क्या नहीं हो रही है, शुगर ही wheat ही हो रहे हैं या फिर चावल ही हो रहे हैं, तो it is not possible that some of the other are produced in that field. So the opportunity cost is not possible to calculate. So it is factor with only one use. अगर one use है तो we are not calculate the opportunity cost value. Second, factors have specific use. If factors of the production are specific factors, returns of these factors are not decided by their alternative use, but it is decided on the basis of their demand. For example, computers can be used only by the person having expertise over computers. कंप्यूटर जो यूज करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, जो स्पेशल नॉलेज है कंप्यूटर का, वही यूज कर सकते हैं। अगर जिसके पास यूज ही कैसे करना है वो नॉलेज ही नहीं है, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. सो वेरी इजी. लिमिटेशंस आर ओनली 2 पॉइंट्स फॉर सेक्शन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके लिए एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि वन स्पेशल, बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक स्पेशल, वन यानी वन यूज, स्पेशल यानी स्पेसिफिक यूज. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज www.rom. www.rom ये शॉर्ट वर्ड है. ROM का मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं. R that is concept of real cost, second one. O that is opportunity cost, and third one M that is monetary cost. So concept of real cost, first point. Real cost, first point, give the definition. Their example are also there. And opportunity cost, the definition and example of that, and give example with above factors also. And monetary cost, that is in terms of some of the monetary value, and monetary value are also decided with their cost of production. अगर प्रोडक्शन के अंदर जो भी कॉस्ट हो रहा है, that is called monetary cost. Second, www.rom. R stand for real cost. Here R stand for R that is real cost. O that is opportunity cost. O यहाँ से आ रहा है opportunity cost. And M that is monetary cost. So concept of real cost, opportunity cost and monetary cost are the three costs are there. Concept of real cost, in the topic of concept of real cost you have to explain in detail. If you have write only 3 points then you will not get proper marks. So यहाँ पे explain different concept of cost आपको याद रखने हैं www.rom. www कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए है कि 3 W आए यानी 3 पॉइंट है किसके, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट के 3 पॉइंट कौन कौन से है? कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट,
कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटरी कॉस्ट। यानी रॉम, जैसे आप रैम रोम जानते हो, कंप्यूटर के लैंग्वेज है रॉम। रॉम एक्चुअली रैम रोम का कंप्यूटर से लेना देना है, मगर यहाँ पे हमें याद रखने के लिए रखना है रॉम यानी रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मॉनिटरी कॉस्ट। सो एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट इज ROM, रियल कॉस्ट, opportunity cost, monetary cost. Now what is real cost, what is monetary cost, that you have to explain in detail. Keep in mind that if you are right only this type of one point, then you will get 0 marks. So first is concept of real cost. What is concept of real cost? Keep in mind that it may be in section E also, or it may be in section D also. So here the concept of the real cost was given by the classical economist. Very important. This idea is presented by classical economists. Second, according to them, real cost is the cost of main factors of the production of land and labor. And in the modern time, the concept of real cost is considered in context what capital and entrepreneur. यानी क्लासिकल के इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये जो कॉस्ट है रियल कॉस्ट, वो दो तरह के कॉस्ट में काउंट किए जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट, सॉरी लैंड एंड लेबर. बट आफ्टर मॉडर्न टाइम्स इट विल बी कंसिडर्ड एज ए ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इट. According to Marshall, the laborers, capitalists, entrepreneur who are involved in the process of production bear psychological and physical burden, which is called real cost. मार्शल अभी भी आपके साथ है, 5th चैप्टर में भी आए हैं, 4th में भी आए थे, लगातार 5 चैप्टर में आपका साथ नहीं छोड़ रहे. तो उनकी डेफिनेशन है रियल कॉस्ट की. उन्होंने ये कहा है the laborers, capitalists and entrepreneur who are involved in the process of production. जो भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे कंप्यूटर बनाते हैं, ट्यूबलाइट बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, उसके अंदर ये 3 लेबरर, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर who are involved in the process of production, जो प्रोसेस प्रोडक्शन के अंदर आ रहे हैं, bear psychological and physical burden. उनको साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक और फिजिकल यानी उनको बॉडी पे बहुत सारा बर्डन उठाना पड़ता है. दिस आर कॉल्ड रियल कॉस्ट. द रियल कॉस्ट इंक्लूड्स द फैक्टर्स लाइक, उनके एग्जांपल फैटिग्यू, बर्डन, देन टेंशन, स्ट्रेस. These are for the laborers. Sacrifice of savings and capital by the capitalist and anxiety, insecurity of indecisiveness faced by the entrepreneur. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Real cost cannot be presented in monetary terms. There is, it is non-monetary cost. Real cost का दूसरा नाम ही non-monetary cost है. ये सभी बातें ध्यान में रख के आपको ये पॉइंट कंप्लीट करना है. Real cost, another name of the real cost is non-monetary cost because it is psychological effect. It will not evaluate in the terms of money. Second, average effect of smoke by factories on health is also a cost in social view and therefore it cannot be measured. बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो आजू बाजू के एरिया में हमें बहुत सारा धुआं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं. दैट इज सोशल कॉस्ट. इट विल बी नॉट रिवील्ड इन दिस. So these are the concept of real cost. Now opportunity cost that we just discussed here. But here opportunity cost, the cost of opportunity cost was presented by Australian economist. Keep in mind that first real cost is introduced by classical, but opportunity cost is introduced by Australian economist and then properly presented by Marshall in one sentence. Very important. Properly presented by the Marshall and then that before Austrian economists were presented. The factor of the production, the factors of the production like land, labor, intervention, capital. The factors of the production have alternative uses, more than one uses. If they are used for a particular use, the other uses are left out. We have to miss. The same cannot be used for the same two-time purpose. Therefore, the best alternative which is left out, it is called opportunity cost. अगर एक जगह हम सर्विस करें तो दूसरी जगह नहीं कर सकते, चाहे वहां ज्यादा पैसे क्यों ना मिल रहे हैं. प्राइवेट कंपनी में जॉब करे या रिलायंस वाले जॉब करे, दोनों में फर्क है. मगर आप प्राइवेट में हो तो रिलायंस वाले जो भी है उनकी इनकम ज्यादा है. दैट इज लेफ्ट आउट. अपॉर्चुनिटी बाय द लेबरर्स. द कॉस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ द unproduced commodity is the opportunity cost of produced commodity. For example, a piece of the land on which cotton, wheat and tobacco can be cultivated, but we start the tobacco and we are not getting in the same farm to other two production like cotton or wheat. So if we earn from that and we are missed to other production, that is called opportunity cost. The concept of the opportunity cost is based on the
two economic fact. First, factors production are scarce and second, factor production have alternative use. दो पॉइंट के ऊपर opportunity cost टिका हुआ है. Factor production of scarcity होनी चाहिए उसकी, and factors production have alternative use. एक से ज्यादा use उनके होने चाहिए. The concept of opportunity cost cannot be presented pricelessly because the alternative uses factors of production remain unchanged. इनको हम price में evaluate नहीं कर सकते. Third point is monetary cost. Real cost and opportunity cost have many limitations. Therefore, the decision related in the production and price determination, the concept of monetary cost is useful. दोनों की लिमिटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, उसकी वजह से दूसरे कॉस्ट जो इंट्रोड्यूस हुए इसको मॉनिटरी कॉस्ट. द प्रैक्टिसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी. देयरफॉर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटरी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट. द प्रैक्टिस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के अंदर वो इवेल्यूएट होते हैं मॉनिटरी फंड. सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The cost of production in terms of money is known as a monetary cost. Very, very important definition. Definition is very important. Monetary cost. The cost of production in terms of money. The cost of production in terms of money is known as a monetary cost. For example, if the cost of incurred to produce 500 units of the commodity is 25,000, then the monetary cost of 500 units is 25,000. Right? Monetary cost include price of raw material. Example is very important. Monetary cost के example क्या है? तो उनके example है raw material and machinery, rent of land, building, wages of workers, interest on the capital, taxes, premium, transportation expenditure are the example of monetary cost. Then monetary cost depend on first cost of factors of production, second level of production and third time of period. तीन पॉइंट के ऊपर मॉनिटरी जो है वो डिपेंड करती है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, देन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम पीरियड्स. ये तीनों पे मॉनिटरी कॉस्ट डिपेंड करती है. ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर थ्री मेन पॉइंट. कॉन्सेप्ट ऑफ रियल दैट इज ROM, आर रियल, ओ ऑपोजिट कॉस्ट और मॉनिटरी कॉस्ट. Explain average revenue and margin revenue with the help of diagram in perfect comparison. ध्यान में रखना, explain average revenue and margin revenue in which market is very very important. कौन से मार्केट में एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है. अगर वो आपने दिमाग में नहीं सेट किया तो you are going committed wrong and you will get 0 out of 5. Keep in mind that very 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 important word is perfect comparison. There are two types of comparison in the market: perfect and imperfect comparison. In perfect comparison, there are very very important concept of price, because in this comparison there is no any worry about the how to sell production. यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात सेटअप होनी चाहिए. अगर आपको डेफिनेशन आती है तो शेड्यूल और ग्राफ आ ही जाने वाले हैं और एक्सप्लेन करना आपके बाएं हाथ का के जो रिपीट हुआ. आगे आपने एक वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ये सेम यहाँ पे आगे बढ़ रहा है. जब आपके क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन आपको दिमाग में सेटअप हो गई, आपको उनके शेड्यूल बन गए, ग्राफ बन गए, तो आपको एक्सप्लेन करना आपके बाएं हाथ का खेल है. तो एक्सप्लेन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस. हियर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कॉमोडिटी आर होमोजेनियस एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट सिचुएशन. ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको थोड़े से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. थोड़े से यानी इन शॉर्ट ऐसे सेंटेंस के अंदर कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एवरीवन कैन नो द मार्केट सिनेरियो, देयर आर so many large number of buyers and sellers and have knowledge about market situation. Second, price determination, price determined by the demand and supply of the commodity. यहाँ पे प्राइस जो डिसाइड हो रही परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर वो डिमांड और सप्लाई के बीच, जैसे हमने थर्ड चैप्टर के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट के अंदर लिखा था कि डिमांड और सप्लाई दो मेन बेसिक पॉइंट है प्राइस डिसाइड करने के लिए. तो यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगी वो डिमांड और सप्लाई के तहत प्राइस डिसाइड. देयरफॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सेलर हैज नॉट टू रिड्यूस प्राइस फॉर सेल ऑफ वन मोर यूनिट. हेंस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरेज इनकम दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम एज मार्जिनल इनकम. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि सेल करने के लिए कोई भी प्राइस रिड्यूस नहीं करेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइस आर रिमेन सेम. There are no decrement for the increase their selling units. Why? Because all can know the price scenario. So there are possibility
is zero to reducing in the price. Price is the main factors here, and then the schedule are there. So first is definition, second schedule. schedule के अंदर ध्यान में रखो, मैं ब्रैकेट के अंदर कैपिटल हैंड राइटिंग में लिखा है प्राइस इज कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल के अंदर प्राइस आपको कांस्टेंट रखनी है, दैट इज यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है सोल्ड यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिट तक हमने मार्केट के अंदर सेल किया। देन आफ्टर प्राइस यू कैन सी 10 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 10। I repeat again, in price are remain same in the perfect competition, so we can see the price in this data, that is same 10 10 10। then after we can see the total revenue, third column of this schedule is TR। TR stand for total revenue। total revenue means अगर आपके पास 2 रुपीस की पेन है, आप 10 पेन बेच रहे हो तो 10 into 2 20 20 is your total revenue। so here multiplication of sold unit and price, that is called total revenue। 10 into 1 10, 2 into 10 20, 3 into 10 30, 4 into 10 likewise 40 30 50 60 70, it is our TR। then second is average revenue AR। शेड्यूल के अंदर कौन से कॉलम है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड सोल्ड यूनिट, थर्ड प्राइस, देन टीआर। टीआर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एस इंटू पी। एस दैट इज सोल्ड यूनिट, पी दैट इज प्राइस। एआर, एआर दैट इज एवरेज, एवरेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस आपको, सॉरी एवरेज मींस एवरेज किसकी निकालनी है, आपको आपके टोटल रेवेन्यू की। तो टीआर डिवाइडेड बाय सोल्ड यूनिट, दैट इज 10। हियर यू कैन सी 10 डिवाइडेड बाय 1 मींस 10 मींस व्हाट, 10 दैट इज आवर total revenue 10, this one 10 into 1 that is 10 divided by 1, 20 divided by 2, 30 divided by 3। so every time we can division of 10 10 10 10 each and every time। and marginal revenue, marginal revenue means change in the total revenue due to addition of one unit। change in the total revenue due to addition of one unit of sold, that is called our marginal revenue। MR आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू के अंदर 10 20 30 यानी एवरी टाइम 10 आर इंक्रीज ड्यू टू वाई, बिकॉज ऑफ यूनिट सेल आर मोर इन वन। सो एक यूनिट अगर बेचेंगे हम ज्यादा तो उससे हमारी टोटल रेवेन्यू 10 पे से 20 होगी, तो 20 और 10 के बीच के डिफरेंस 10। और दूसरा 2 पे से 3 हम बेचेंगे, दूसरा एक ऐड करेंगे यूनिट बेचने के लिए, तो हमारी 20 पे से 30 होगी, यानी 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, likewise 10 10 10 10। so that here one statement is there, P equal to AR equal to MR, P equal to MR equal to AR। then with the help of this diagram, on the x axis there is production and on y there is price, AR and MR। so with the help of this graph we have to explain the all diagram as shown in the diagram। the diagram of the firm working as a perfect competition, there is very important explanation is P equal to AR equal to MR। we can see here P is 10, here price that is PP 10 10 10 10 10 10, then second AR that is average revenue, we can see division of this 10 here 10 10, so every time it will be division of 1 2 3 unit, that is 10। and MR that is difference between TR के बीच का difference 20 minus 10 30 minus 20, that is 10। so P equal to AR equal to MR in the perfect competition। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है, अगर आपके डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आ गई आपको अच्छी तरह से रेवेन्यू की, मार्जिन रेवेन्यू की और एवरेज रेवेन्यू की, देन यू कैन इजीली गेट दिस ऑल पॉइंट्स। कि आपको शेड्यूल भी बना सकते हो। शेड्यूल में 5 कॉलम है, पहली है आपकी सोल्ड यूनिट, सेकंड प्राइस, दोनों को मल्टीप्लिकेशन दैट इज टीआर, और टीआर और सोल्ड यूनिट का मल्टीप्लिकेशन दैट इज एआर, और टीआर के अंदर डिफरेंस इज दैट इज एमआर। दोनों के बीच आपको ग्राफ बनाने हैं, एक्स के ऊपर प्रोडक्शन और वाई के ऊपर आपका प्राइस एआर एमआर, और एक ही लाइन खींचेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एआर इक्वल टू पी इक्वल टू एमआर। तीनों लाइन एक ही आएगी, उसका ग्राफ बनाना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन ई के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट, काफी खतरनाक क्वेश्चन लास्ट में आ रहा है आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आपको प्रूव करने हैं थोड़े से स्टेटमेंट। फर्स्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम द इंटररिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम आसान है, और लेस देन इक्वल टू मोर देन काफी आसान है। 2-3 बार, डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम आसान है। डेफिनेशन आसान है तो डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम भी आसान ही है, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन काफी आसान है। ध्यान में रखना,
डेफिनेशन के साथ डायग्राम आसान है. डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, definition of both, that is average cost, marginal cost की definition. Average cost is cost per unit of the production, while marginal cost is a change in the total cost when the additional unit of the production is produced. When the price of the commodity is greater, the average cost, the producer will decide to continue production in the long run. जब price commodity की ज्यादा होती है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन हम लॉन्ग रन तक करेंगे ताकि हमको बेनिफिट मिले. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, अगर प्राइस बढ़ रही है मार्जिनल कॉस्ट से, द प्रोड्यूसर विल डिसाइड टू कंटिन्यू प्रोड्यूस योर प्रोडक्शन इन शॉर्ट टाइम. अगर हमारी प्राइस बढ़ जाती है मार्जिनल कॉस्ट से तो शॉर्ट रन के अंदर हम प्रोडक्शन करने के बारे में सोचेंगे. Thus, the relationship between average cost and marginal cost is important in taking decision regarding production. तो हमारा जो डिसीजन लेते हैं हम कौन सा, मार्जिन, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कहाँ बढ़ाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, शॉर्ट रन में ज्यादा करना है, लॉन्ग रन में ज्यादा करना है. दिस आर द डिसाइडेड विद द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप. MAR, marginal cost less than average revenue. Sorry, marginal revenue, not marginal cost. Keep in mind that marginal revenue less than average revenue. Marginal cost. I repeatedly wrong committed mistake here. AR, not AR. Actually, this is AC, average cost and average cost. You have to replace this in your notebook. C instead of R. C, that is called cost. R, that is called revenue. Here question is average cost, but by misprint here committed RRR. So RRR is wrong totally, but CCC is right. So MAR, that is marginal cost is less than average cost. Second, marginal cost is more than average cost, and marginal cost equal to average cost. These are the three interrelationship that you can see. With the help of this diagram, we can find out actual data of AR, MR, and here. This is the diagram, and this is the interrelationship. We can find here. This is the marginal cost curve, and this is average cost curve. Marginal cost is less than average cost. Marginal cost is equal to average cost, and marginal cost is more than average cost. So same here. The interrelationship is also there. One second, let me clear first. Here question is cost. So cost of marginal and average cost. So definition are very clear. Average and marginal cost, right? Average cost की definition और marginal cost की definition आपके दिमाग में सेटअप हो गई होगी. अब definition के साथ साथ आपको डायग्राम आसानी से बनाना है. तो डायग्राम कैसे बनेगा आपका, तो हमने यहाँ से आपको डायग्राम दिखाया है. ये डायग्राम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का डायग्राम. यहाँ पे एक्स के ऊपर देख सकते हैं आउटपुट यानी प्रोडक्शन यूनिट है. वाई के ऊपर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों है. अब सबसे पहले एवरेज कॉस्ट इज डिपेंड ऑन टोटल कॉस्ट, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट इज डिविजन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, एंड टोटल कॉस्ट इज टोटली डिपेंड ऑन फिक्स्ड and variable cost. Due to increase in the variable cost, total cost is also increased because fixed cost remains fixed at any level of production. So if at some of the level we can judge that there are schedule of average cost. Average cost के schedule के अंदर हमने देखा, variable cost के schedule के अंदर हमने देखा था कि variable cost जो है वो like this. ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट के डेटा है. यहाँ पे आप देख सकते हो 80, 150, 210, 290, 390, 500, 620. सो वेरिएबल कॉस्ट आर लाइक दिस. 80 में 70 प्लस किए, 70 में हमने 60 प्लस किए, 60 में वापस 80 प्लस कर रहे हैं हम, यानी 0 के अंदर 80 प्लस हुआ. कुछ नहीं है, अगर प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो 0, बट हियर स्टार्टिंग विद 10 यूनिट्स. सो 80 ऐड करके 80, उसके बाद 70 प्लस किए 150, 80 प्लस 70 यानी 150, 150 के अंदर 60,
80 70 60 ऐसे डिक्रीजिंग मोड पे ऐड करना है टोटल कॉस्ट के अंदर। 0 प्लस 80 80 70 आए, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 60 210 और उसके बाद वापस 80 ऐड करो यानी 290 और उसके अंदर 100 ऐड करो यानी 390। तो यहाँ पे जो खर्च हो रहा है वो 80 से 150, 150 से 210, तो यहाँ पे 80 70 60 का डिफरेंस था और बाद में देखे तो 80 और 100 का डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस बढ़ रहा है। So with the help of this, it is directly affect our total cost also, because fixed charge remains fixed. If 100 are calculated there, so total cost are 180, 250. Adding addition of 100 in this, that we can find out total cost. यहाँ पे टोटल वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स से हमारी बनती है टोटल कॉस्ट की डेटा। तो 80, 150, 210, 290, 390 जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। तो 100% ये जो टोटल कॉस्ट है वो इफेक्ट करेंगे। टोटल कॉस्ट को इफेक्ट करने का एक ही कॉलम है, वो है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट चेंज हो रही है। तो टोटल कॉस्ट इफ द चेंजेस बाय द एवरेज कॉस्ट, द टोटल एवरेज कॉस्ट आर आल्सो डिपेंड ऑन दिस, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है, टोटल एवरेज कॉस्ट है वो डिपेंड करती है वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट और प्रोडक्शन से डिवीजन होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम फिर से आ जाते हैं अपने ओरिजिनल आंसर के अंदर, कैसे क्या कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद डायग्राम। डायग्राम जो आपको दिखा यहाँ पे वो ऐसा बनता है डायग्राम। ये डायग्राम यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, सबसे पहले अगर एवरेज कॉस्ट हम देखिए, एवरेज दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट। सो टोटल एवरेज कॉस्ट ऑलवेज इन यू शेप, यू कैन सी हियर, here and here, intersection point of this all are known as a average cost, right? Average cost is like a U shape and marginal cost is like a hockey stick। यहाँ पे ऐसे हम हॉकी बनाते हैं, तो ये हॉकी स्टिक है। अब दोनों के बीच के इंटररिलेशनशिप कैसे प्रूव करना है, फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट वेरी क्लियरली हियर। फर्स्ट इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ 0 से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो कम तो हो रहा है मगर उससे ज्यादा कम हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है। So at that time average cost is more than marginal cost। यहाँ पे जो ऊपर जा रही है ये लाइन, that is average cost। average cost ऊपर से जा रही है, marginal cost नीचे से जा रही है, यानी marginal cost is less than average cost। then at the level of 4 point, यहाँ पे 4 यूनिट के ऊपर देखे तो दोनों average cost और marginal cost इक्वल हो गए हैं। then after we can see the marginal cost is higher and higher with in comparison of एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे पहले एवरेज कॉस्ट आगे था, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आगे जा रहा है। सो दैट सेकंड पॉइंट इज MC is equal to AC, MC that is marginal cost, AC that is average cost। At 4 unit of level in C point there are equal relationship between these two, and then after marginal cost is more than average cost। So these are the relationship you have to prove। So here marginal cost less than AR, marginal cost AR not AR, average cost, I repeatedly please correct it, AR not, it is AC, average cost। marginal cost is more than average cost and marginal cost is equal to average cost। instead of R you have to keep in mind this is not marginal, this is average cost। so here definition of both, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम आसान है। डायग्राम मैंने बताया पहले यू शेप कर दो, उसके बाद एक हमारा हॉकी स्टिक कर दो तो आ जाएगा। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आपके लिए काफी आसान है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन को समझाना। हॉकी स्टिक दैट इज मार्जिनल कॉस्ट और यू शेप दैट इज एवरेज कॉस्ट। एक नीचे से ऊपर जा रही है, एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, दूसरे ऊपर वो पहले मार्जिनल कॉस्ट बढ़ के जाते हैं और एवरेज कॉस्ट बाद में होता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो आई एम थैंकफुल यू ऑल। Thanks a lot for watching this video. Now ready for chapter 6. Keep watching ICT for you and be ready for your next test of 27 August or 28 August. And very important that those who are still not subscribed, new viewers, please subscribe this channel, and those who have subscribed this channel, I am heartily thankful। And install my ICT for you app after 8-9 chapter over. All the chapters link will be available on this app also, and there are so many updates are going on with economics or accounts or state। so once again I am thankful to all। watch this video, and if you have any query, any doubt regarding this video, please contact 9662532418
or you can mail me on cknaik78@gmail.com, or you can comment me in your comment box. So heartily thankful to all. Thanks a lot. Keep watching 2 to 3 times this video so that you can know everything. Thanks a lot.